Now, students, a periodic signal or you can say non-periodic signal. Okay, so if I talk about the periodic signal, if the signal is not periodic, so easily we can see we can say that this signal is non-periodic or a periodic signal. So, for if the signal is, we have seen the already condition of this periodic. So, if x t plus t is not equal to x t for the continuous domain, if we are talking about, and this is for discrete. Okay. So, for discrete x n plus capital N is not equal to x n. Okay. So, this is simple definition for a periodic or non-periodic signal. Now, let us see one example over here. In example, you have to show that the complex exponential of signal x t equal to e to the power j omega t is periodic and its fundamental period is 2 pi by omega naught. Okay. So, सिग्नल x t इक्वल टू ई टू द पावर जे ओमेगा टी गिवन है आपको शो करना है कि दिस सिग्नल इज पीरियडिक एंड जो उसका फंडामेंटल पीरियड है वो क्या है 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट. ओके. सो दिस सिग्नल इज गिवन टू यू x t इक्वल टू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी. ओके. नाउ फॉर पीरियडिक वी नो द कंडीशन शुड बी एक्स टी प्लस टी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स टी के बराबर होना चाहिए. सो इफ एक्स टी इज दिस गिवन, मतलब इसका क्या हुआ, ई टू द पावर जे ओमेगा टी इक्वल टू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस टी. ओके. सो इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. सो अब हमने क्या किया, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया टी से. सो वी कैन राइट इट डाउन इन दिस फॉर्म. सो इफ द सिग्नल इज your periodic. Okay. So, if you want to equal to this one, it should be equal to 1. Okay. So, you can write it down e to the power j omega t equal to 1 or you can write it down e to the power j 2 pi by m, 2 pi into m. So, from here you can write it down omega t equal to 2 pi m, and here from here you can calculate the fundamental your period. Okay. And m is the positive integer value. So, for m is means number of times, how many number of times your signal is repeating. Okay. So, this is your fundamental period and this same you have to prove it. Okay. So, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ओके. अगर पीरियडिक एंड अपीरियडिक का कोई सिग्नल पूछा जाता है आपसे या प्रूफ करने को पूछा जाता है तो इस तरह से इस अप्रोच के लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. सो देयर आर अनदर सम example related with your to calculate the time period. So, suppose if the x1 t equal to j e to the power 10 t is given. Okay. And what is the fundamental time period? So, for that we know the standard signal is e to the power j omega naught t ये होता है. So, from here easily you can write it down t equal to जो होता है 2 pi upon omega naught. From comparing from here you can easily find out the value of omega naught. So, from here you can calculate the capital T. Same in this question, if you are going to compare with the generalized signal sin omega t plus theta. So, from here you can compare this value. Okay. So, t equal to 2 pi upon omega naught, here omega naught is equal to 1 by 2. Okay. So, fundamental period is 4 pi. Okay. So, this is all about your periodic and non-periodic signals.